Welcome back to our lecture series of metric spaces. In this lecture, we are going to discuss homeomorphism, equivalent matrix, and isometry. So, let us start with the definition of homeomorphism first. These all are very crucial topics in metric space, and this is definition 3.5.1, and this is going to be defined homeomorphism. Okay, so let us consider, let x comma dx and y comma dy be any two metric spaces, then a function that is f defined from x to y, which is both 1 to 1 and on to, is said to be a homeomorphism if and only if first the mapping f defined from x to y is continuous. Now since this f is 1 to 1, so 1 1 and on 2, so we can define that the mapping f inverse, that is from y to x, is continuous. ओके, तो कोई भी ऐसा वन वन ऑन टू फंक्शन जिसकी जो खुद और उसकी इनवर्स इमेज कंटिन्यूस है, तो उस केस में वी विल से दैट दिस फंक्शन एफ इज अ होम्योमॉर्फिज्म फ्रॉम एक्स टू वाई. Okay, and if there exists some homeomorphism between x and y, then we call this y as homeomorphic image of x. Okay, so let me point out this also. If there exists a homeomorphism of x onto y, then y is said to be homeomorphic image of x, or you can say, or we say x and y are homeomorphic. Okay, so this is about the homeomorphism between two metric spaces and the homeomorphic images of a metric space. Okay, now here we can say, अगर हम ये कह रहे हैं कि दोनों जो फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूस हैं, अगर हम x से y में जाए या y से x में जाए, तो ये हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है. लेट मी पॉइंट आउट दोज वन ऑल्सो. ओके, सो हियर यू कैन सी, सपोज वी हैव this is x metric space, and somewhere suppose this is our y metric space. Okay, and we have a function f from x to y. Okay, अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम x से y में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज आर f इमेज. ओके, f. नाउ सपोज वी आर सेइंग दैट दिस f इज होम्योमॉर्फिज्म. इसका मतलब x से y में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने क्लोज्ड सेट और ओपन सेट में डिफाइन की थी कि
कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर यहाँ पर हम कोई ओपन सेट लें और उसकी इन्वर्स इमेज भी कंटिन्यूअस हो। ओके, बट जब हम इन्वर्स इमेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी तो हमारे पास ऑलरेडी ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पर कोई एक ओपन सेट देखेंगे, यहाँ पर सपोज दिस इज सम ओपन सेट। ओके, तो इसकी जो इमेज होगी, द इमेज ऑफ दिस फंक्शन, इनवर्स इमेज ऑफ दिस फंक्शन f inverse of this open set, that will be also open, right? This is also open. हमने क्या किया, इसकी f इनवर्स इमेज ली तो वो एक ओपन सेट बना। ओके, now same thing can be done from the left side also. Okay, what I'm trying to say that if you consider any point, any set which is open, and if you identify the f इनवर्स ऑफ इनवर्स इमेज। ओके, अब हमने क्या कहा कि जब हम y से x में f इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे वो भी कॉन्टिन्यूस है। तो जब हम f इनवर्स की कॉन्टिन्यूटी को अप्लाई करेंगे तो f इनवर्स की कॉन्टिन्यूटी मतलब हमें यहाँ से फंक्शन लेना, यहाँ से सेट लेना और उसकी इनवर्स इमेज आइडेंटिफाई करनी है। और हमें पता है f इनवर्स ऑफ इनवर्स दैट इज समथिंग to f. Okay, so if we identify the f inverse of inverse image of this open set, then this will be also an open set, right? हम ये क्यों कह रहे हैं this is the f inverse of inverse image? ठीक है, ये हम क्यों कह रहे हैं? Due to the continuity of inverse image. Okay, let me write that we have a function this and this is f इनवर्स। अब हमने ये कहा कि f और f इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की जब हम डेफिनेशन f के लिए अप्लाई करेंगे तो y का कोई भी ओपन सेट x के किसी ओपन सेट पर ही मैप होगा। और अगर हम f इनवर्स की कंटिन्यूटी को यूज़ करें तो इस केस में x का कोई ओपन सेट y के किसी ओपन सेट पर ही मैप होगा। इसका मतलब जब दो मैट्रिक स्पेसेस x और y होम्योमॉर्फिक है तो उस केस में हमेशा एक मैट्रिक स्पेस का ओपन सेट दूसरे मैट्रिक स्पेस के ओपन सेट के कॉरेस्पॉन्ड ही होता है। ठीक है, सो लेट मी राइट दिस ऑल्सो, और सिमिलर थिंग कैन बी डन फॉर द क्लोज्ड सेट ऑल्सो। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ से हम कोई ओपन सेट लेंगे और वो किसी क्लोज्ड सेट या फिर नॉट ओपन सेट पर मैप हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा वेन एवर दिस फंक्शन इज होम्योमॉर्फिज्म। ओके, सो लेट मी राइट दिस पर्टिकुलर नोट ऑल्सो। सो if x and y are homeomorphic, then the homeomorphism puts their points in 1-to-1 correspondence in such a way, and this way is identify the continuity of f and f inverse. Okay, in such a way that their open sets, and the same statement for the closed sets also, so open sets also correspond to one another। ठीक है, तो x के ओपन सेट y के ओपन सेट के कॉरेस्पॉन्ड होंगे और y के ओपन सेट्स x के ओपन सेट के कॉरेस्पॉन्ड होंगे, एंड दिस इज ड्यू टू द कंटिन्यूटी ऑफ f and f inverse mappings। okay, now we have the another notation to identify कि हम कैसा notation use कर सकते हैं whenever we have a homomorphism between two metric spaces। okay, so when two metric spaces x and y
are homeomorphic, then we write that X is homeomorphic to Y. So this is the symbol of homeomorphism between two metric spaces. Okay. Now you can see अगर हम इसे एक relation के जैसे identify करें then this relation is an equivalent relation. Okay. So let me write this one. The relation X is homeomorphic to Y is an equivalent relation. Okay, how you can identify this? First, if you identify कि अगर X is homeomorphic to Y, then there exists a homeomorphism between X and Y. So let me consider that. So X is homeomorphic to Y. We are going to prove this. Okay, X is homeomorphic to Y. Then this will imply that there exists f from X to Y such that f is homeomorphism. Okay, and if we are saying that f is homeomorphism, then this is 1 1 and onto function, and moreover, this is a continuous mapping from x to y, and as well, its inverse image f inverse is continuous image from y to x. Okay, so we have these properties for this f. Now we are going to prove that this x is equivalent to y. Okay, in the relation, this relation is equivalent to y because मैट्रिक स्पेस का इक्विवेलेंट होना अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द रिफ्लेक्सिव. कैसे हम बात कर सकते हैं क्या x हमेशा x से रिलेटेड है? सो वी कैन डिफाइन अ मैपिंग दैट लेट z डिफाइन फ्रॉम x टू x such that z of x is equals to x. Okay, then obviously this function is 1 1, this function is on to, and of course this is identity mapping from x to x, then this will be continuous, and its inverse image that will define in a similar way that z inverse of x is same as x. Okay, so in that process we can say this z is homeomorphism from x to x, and hence you can identify the identity map for every metric space which is homeomorphism from the metric space to itself. Okay, which is a homeomorphism. Okay, so first you can say x is homeomorphic to x. So this is about reflexive. Then come to the symmetry. If we say that let x is homeomorphic to y, then obviously this y is homeomorphic to x, लेकिन हमें ये proof करना है. ठीक है, then we can suppose a function f from x to y such that f is homeomorphism. Okay, now let z is equals to f inverse. ठीक है, then z is defined from y to x, which is 1 to 1 and on to, क्योंकि अगर f 1 1 और on to है तो इसकी इनवर्स इमेज भी 1 1 on to होगी. ठीक है, एंड z
that is equals to F inverse is continuous, and this is first one. And second, if you identify Z inverse, that is equals to F inverse of inverse, and which is equals to F, and ये तो by definition continuous हो है ही continuous, तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया है y से x में such that it is 1 to 1 and on to it, this z is continuous and its inverse image is continuous. Okay, so thus z is a homeomorphism. Okay, from y to x, that is y is homeomorphic to x. So this is about symmetricity, and now come to the transitivity. Okay, so let x is homeomorphic to y and y is homeomorphic to z, then we shall show that x is homomorphic to z. और ये कब homomorphic होगा? Whenever we have a function from x to z which is continuous 1 to 1 and on to, and of course this its inverse image must be also continuous. ठीक है, so let f defined from x to y is homomorphism. Okay, and z defined from y to z is homeomorphism. Okay, then we define that z or f, okay, composition of z and f, which is of course a function from x to z, is homeomorphism. ओके, अब हम ये शो करेंगे कि होमोमॉर्फिज्म कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज लेट मी राइट, बिकॉज फर्स्ट f and z are 1 to 1 and on to, or precisely you can say this is a bijection. Okay, and whenever we have the composition of two bijection functions, then their composition will be also a bijection function. Okay, and hence their composition, that is ZOF is 1 to 1 and on to. अब हमने जब कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किया था तो हमने प्रूफ किया था कि अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूस है तो इनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूस है. ओके, नाउ सिंस एफ एंड जी आर continuous and composition of two. अब यहाँ पर हमने ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि कॉम्पोजिशन किस तरीके से कॉन्टिन्यूस होता है. कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, राइट? Therefore, ZOF is continuous. Okay. Third thing is that what about ZOF inverse? And of course, we know that this is F inverse O Z inverse. And again, G inverse and F inverse both are continuous, and again this is defining a composition of two continuous function, okay, which is
which is composition of two continuous functions f inverse and z inverse, right? And hence continuous. Okay, this is the composition of two continuous function and that's why this is continuous. So thus z operation f is 1 to 1 and on to, then ZOF is continuous, and the third one is that ZOF inverse is continuous. Okay, and therefore ZOF defined from X to Z is homeomorphism. Okay, this is just due to the definition of homeomorphism, that is x is this relation is also true from x to z, or you can say x is homeomorphic image, this z is homeomorphic image of this x. Okay, so this is how you can identify the reflexive, symmetry and transitive. Okay, as a conclusion we can say the relation, this one is equivalent. Okay.